Hi guys, this is Reshma from Glamu. I am in Scotch Plains, New Jersey, USA. I'm a practicing hairstylist for 6 years. I got licensed by Redken, 5th Avenue, New York. But I was still not confident with hair coloring. Then I came across Shama's Makeover, a YouTube channel, and the videos were for beginners, but very helpful for me. I tried one of her haircuts on my doll head, and it came out really good. The next day, I tried it on one of my clients in the exact same way, the exact same steps. And it came out really beautiful, and my customer was very happy. और मैं शामा जी से classes दे रही हूँ for last 2 months. This is my place. Let me show you around. मैं आपको दिखाती हूँ. ये मेरा salon है. इसका नाम है Glamu. ये मेरा station है. So guys, would like to share all of you कि अगर आप लोग भी USA न्यू जर्सी में रहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा. कॉन्टेक्ट नंबर इज़ 7327886678. So book your seat right now. She's really very good for hair color. शामा जी एक बहुत ही नाइस, काइंड और स्वीट पर्सन है. बहुत ही डाउन टू अर्थ है. उनकी क्लासेस बहुत ही मज़ेदार होती है. आप बहुत कुछ सीखते हैं उनकी क्लासेस से. 2 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा है. मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ हेयर कलरिंग में. और जिसको भी इस प्रोफेशन में जाना है या रहना है और एक्सपर्ट बनना है, मास्टर बनना है, डेफिनेटली ये क्लासेस उनके लिए है. और मैं शामा जी के बारे में क्या बताऊं. जितना बताऊं या जितनी भी तारीफ करूं कम है, क्योंकि वो शी इज़ एक्सेलेंट. शी इज़ एन एक्सेलेंट एजुकेटर. वो एक बहुत ही बेहतरीन टीचर है. वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझती है और वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से जानती है. सिखाना बहुत अच्छी तरह से जानती है. तो दिस इज़ अ मस्ट. वो हेयर को और हेयर कलर को समझती है, एंड देन शी नोज के आपके क्या शॉर्ट कमिंग्स है या आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं. तो आपको वो एक्सप्लेन बहुत ही सिंपल और सही तरह से कर सकती है, जिसकी वजह से आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी होता है. और 3-4 तरीके से आपको समझाती है कि बाल को किस तरह से देखना है, किस तरह से कलर को समझना है, किस तरह से उसका ब्रेक डाउन करना है. और ये इतना इजी हो जाता है आपके लिए. तो आपको पता होता है कि कंसल्टेशन किस तरह से करना है, कितना टाइम देना है, और फिर क्या कलर्स यूज़ करने चाहिए और कितने परसेंटेजेस में यूज़ करने चाहिए. ये आपके लिए इतना इजी हो जाता है कि आप फिर डिफ़िकल्ट क्लाइंट्स को भी लेने के लिए घबराते नहीं हैं या अनईजी नहीं फील करते हैं. यू नो, इन शॉर्ट आप एक्सपर्ट बन जाते हैं या मास्टर बन जाते हैं कलर्स के, बिकॉज आपको पता है कि पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करता है. और शामा जी बहुत ही नाइस इंस्टिंक्टिव पर्सन है. तो हमारी जब भी क्लास होती थी तो वो मेक श्योर करती थी कि सारे ही स्टूडेंट्स यू नो फिजिकली और मेंटली भी हाजिर रहे क्लास में. तो अगर कोई पर्सन मेंटली कुछ डिस्टर्ब्ड है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको पता चल जाता था कि ये पर्सन को कुछ ध्यान नहीं लग रहा है क्लास में. तो वो उनसे बात करती थी कि कुछ इश्यू है आपको. आई मीन कोई भी एजुकेटर या टीचर को केयर नहीं होगा. उसका काम है सिर्फ क्लास लेना या क्लास देना, तो वो कंटिन्यू करेगी अपने काम से. बट शी वुड टेक दिस पर्सनल अप्रोच कि वो मेक श्योर करेगी कि यू नो आपको कोई प्रॉब्लम है, ऐसे कि क्या प्रॉब्लम है, यू नो आप ध्यान नहीं दे सक रहे हो. तो वो पर्सन शेयर करता है और फिर लाइट फील करता है और फिर ध्यान दे सकता है क्लास में. या तो किसी क्लाइंट से उसको प्रॉब्लम होती है, किसी क्लाइंट का कोई हेयर कलर में या
ہیئر کلر صحیح طرح سے نہیں ہوا ہے اور وہ کلائنٹ پھر سے آنے والا ہے یا آنے والی ہے، تو پھر وہ کلاس کے لیے ایک سبجیکٹ بن جاتا تھا. ہم سارے مل کے ڈسکس کرتے تھے، ہم سارے مل کے سب اپنا انپٹ دیتے تھے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے. اور ہمارے لیے ایک ایجوکیٹو کلاس بن جاتی تھی، ایک پریکٹیکل کلاس بن جاتی تھی کہ ہم سارے سلیوشن ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہر ایک کو وہ انکریج کرتی تھی کہ پارٹیسپیٹ کریں اس میں، کہ آپ کا کیا انپٹ ہے، واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے. I think that is a very remarkable feature in a teacher, in an educator, to make sure کرتی ہے کہ وہ ہر اسٹوڈنٹ ایکولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اور جب تک ہر اسٹوڈنٹ کا لیول بڑھ نہیں جاتا تب تک کلاس آگے نہیں چلتی ہے. تو اٹ واز لائک اے گروپ session, we were all together, we were like a family, it was not only like ہم educate کر رہے ہیں, but it was like a bond, ہمارا ایک bond تھا. She was like a family matriarch and ہم سب family members تھے. So I mean, she is awesome. جس کو بھی یہ کلاس لینی ہے, please don't miss it. You'll be missing something really exciting, something great. So آپ لیجیے یہ کلاس, یہ بہت ہی زبردست اور شاندار کلاس ہے. ڈونٹ مس اٹ. It's awesome. Like, I have to watch more of her YouTubes and learn from it, because this is helping me. So I would like watch all her videos, and in one of the videos she was like, I'm going to take online classes, and I was really very excited. And I was like, online kaise hoga? But let me tell you, she started with the basics, the theory, the core of the color and the color system of L'Oreal. And for me, it was like an aha moment. Like, everything was getting clear day by day. I would send her the pictures of my clients' hair, and she would help me solve the problem. She would not just give me the solution like right away. She would be like, let's just do some brainstorming, and then we would come to a solution, together. And that really helped me so very much. I am so much more confident now with hair coloring. Shamaji absolutely understood where I was coming from. Hairstylists in the Western countries, they need answers, and they need it fast, and they need to have it like with an awesome result. So we have to hit all the four corners of the square. Shamaji has been God sent for me. I'm not even exaggerating here. It literally changed. I literally changed my color line to L'Oreal Profession. Like, I added L'Oreal Profession to my color line as I run my own salon. I have my own place. And since then, I have been having wonderful results and extremely satisfied and returning clientele. It's like Shamaji took my finger and showed me how to walk my talk. From customers' consultation to sending the customers or the clients with, the right home care, with the right advice, in addition to a beautiful set of hair on their head. I could have literally never done it without her. Shamaji encourages you, pushes you, makes you grow, challenges you, but she's also so kind, so humble, so sweet, and so down-to-earth person. Every class, she would make sure everybody is on board, like physically, mentally, and emotionally. If somebody felt a little bit off, like, she would have the sixth sense that somebody is like not there mentally or emotionally,
She would talk to that person briefly so that the person gets it out of her system and her or his system, and then concentrate on the class. Or if they had a problem with one of the client and that's bothering them, that would become like the problem of the class. Like we would all try to solve it, and that would be like so exciting for all of us. It's like two heads trying to work together has a better solution. So yours, like every head is trying to give a solution, and it would teach us so much more. We would all, she would make sure like every single person in the class is giving their input to solve the hair color related problem. And the person would have, have a very thought out solution and would be feeling confident about it if they have that returning client for like a correction or something. Shamaji gives you so many tips and tricks from under her sleeve. Yes, it's like magic. You'll be like, oh my God, I could never have thought about that. And this takes so much little time and so much little effort. Really, you become a master of hair coloring. Shamaji follows a structure in reading the client's hair, in reading their hair color, and she follows that structure. And if you follow that structure, the way she reads the client's hair, the way she consults the client, and the way she breaks it down for the end result, there is no way that you'll be an excellent hairstylist or excellent hair colorist. Hello Shamaji, thank you so much. You're an excellent educator. Look at this. आपके पास सीखने के बाद देखिए मेरे फ्रेंड्स का मैंने बाल कलर किया हुआ है. So happy. बहुत pretty लग रहा है. Yo Reshma, good job.